इस बात को। अगर आप देखें तो हमारे दुश्मन जो है ना, हमारे सारे त्योहारों पे अटैक कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट हैज टू बी रेजिस्टेड। दुनिया की प्रदूषण प्रॉब्लम क्या इंडिया की दिवाली की वजह से है क्या? क्या दिल्ली की प्रदूषण प्रॉब्लम दिवाली की वजह से है क्या? तो आप जो है उसके बाद देखो तो आप कृष्ण भगवान का माखन का घड़ा जो है वो चाइल्ड को रिस्क करता है। अगर आप कुछ भी करो, इट इज पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, उस पर ठोक दिया। देन आई रियलाइज दैट ये तो मजाक है। वो कत्लेआम करते हैं गाय बकरियों का बकरीद पे वगैरह, वो सब ठीक है। क्रिश्चियन करते हैं 4th जुलाई सेलिब्रेशन, उसमें सारे पटाखे छूटते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन हमारा दिवाली एक दिन का मामला है, उसमें 1 घंटे वर्ग में उसमें सत्यानाश हो गया। देन यू रियलाइज कि दिस इज अ डिलिबरेट अटैक ऑन अस। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी रेजिस्टेड एंड फॉट। तो अगर आप कहते हैं कि कहते हैं बैलों को लड़ाना, जो हमारे जलकुड़ी वहां पे होता है केरला में, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट, इट्स अ टॉर्चर ऑफ बफलोज, दे आर रनिंग। अरे जब हत्या करते हो तो वो नहीं है। दैट इज, यू नो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। होली इज लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, होली इज अ वेस्ट ऑफ वाटर। अरे हर चीज को हमारे में वेस्ट कर दिया, हमारी सेलिब्रेशन को वेस्ट कर दिया। दैट हैज टू बी रेजिस्टेड। सो आई एम विलिंग टू लिव with 2 days of patake than to be suspending that for somebody else's sensitivity who doesn't care for my sensitivity. Let's put it that way. एक्चुअली आपने प्रदूषण की जब बात करी ना, तो सबसे बड़ा प्रदूषण है कि हमको हमारी जो सभ्यता है उससे ही दूर करने की कोशिश की जा रही है। Correct. निरंतर हमको, जैसे मैं लोगों को सुनता हूँ, कभी कभी अपने सनातन धर्म के भाई बहनों को भी सुन रहा हूँ मैं, कि सब लोग बोलते हैं शत्रुबोध खत्म हो गया है। एक्चुअली शत्रुबोध भगाने के लिए एक ही पुस्तक है, एक भगवत गीता, क्योंकि अर्जुन का भी शत्रुबोध चला गया था अपने रिश्तेदारों के सामने, लेकिन लड़ाई तो फिर उसके बाद गीता सुनने के बाद हुई ना। तो एक ये है, दूसरा ये है कि जो प्रदूषण का जो जो पूरा जो आर्ग्यूमेंट है प्रदूषण का, वो एक्चुअली जो हमारे मीडिया जो प्रोड्यूस कर रहा है। पहली बात तो ये भूति जी, भारतीय अभी अमेरिकन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, तो जो भी अमेरिकन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होगा उसकी वॉइस नेचुरली नहीं रहेगी, क्योंकि उसको कोई और बंद करा सकता है। जैसे आज ये कंट्रोवर्सी हुआ कि एएनआई के वीडियो में, काफी कंट्रोवर्सी हुआ एएनआई के वीडियो का, कि आईएएफ को और बाकी लोगों को काफी उन्होंने मजाक में बात किया, कुछ एनालिस्ट ने, विच इज ऑल्सो ए प्रदूषण, कि अपने आप को नीचा दिखाना हर समय। भाई अगर देखिए क्या है कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो भी हैं, यू एंड आई नो कि मैंने वहां पे अप्लाई किया था एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड। इफ आई वाज सिलेक्टेड आई वुड नॉट बी इन यूएस, क्योंकि माय फर्स्ट चॉइस वाज इंडियन आर्म फोर्सेस। और इंडियन आर्म फोर्सेस में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या वो इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे कौन सा डेटा ब्रीच होगा कौन सा नहीं होगा? जस्ट इमेजिन, सोचने की बात है ये, कि उनके ऊपर इस तरह की बातें करना, वो भी बड़े बड़े एनालिस्ट बातें कर रहे हैं। आई थिंक इट इज फॉर देम टू सी कि प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण किधर है, क्योंकि सामाजिक लोग, सामान्य लोगों के पास प्रदूषण नहीं है। सामान्य लोग तो दे आर वेरी लॉयल टू आवर कल्चर एंड आवर थिंग्स, लेकिन ये जो इलीटिस्ट माइंडसेट है ना, वो बहुत प्रॉब्लम है। राइट। अच्छा, एक और विषय पे आप बात करें। शरद जी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। नमस्कार शरद जी। नमस्कार। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं शरद जी। हैप्पी दिवाली, दीपावली। Happy Diwali. You're sounding like an American. Are you guys not American Panchayat? I said you are sounding like an American. I didn't say you are American. ये अमेरिकन भी है, दोनों ही। Passport wise, yeah, but civilizational wise नहीं। That's right. So शरद जी थोड़ा सा इसमें बताइए। हम लोग डिस्कशन शुरू किया था कि, और विभूति जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया प्रदूषण के ऊपर, और किस तरह हम लोगों को कैंपेन किया जाता है, दिवाली पे पटाखे ना बजाए जाए, होली पे रंगों से ना खेला जाए, सूखे रंग यूज किए जाए, हर जगह होता है। आप इसमें थोड़ा क्या बोलेंगे? उसके बाद हम लोग इलेक्शंस पे आएंगे, इलेक्शन, अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर। थोड़ा कपड़ा सब सही कर लूं। हाँ, ओके। हाँ, समझ जाइए एकदम, आप तो हीरो वैसे भी हैं। तो श्रोतागण नमस्कार। ये जो आपके एंकर साहब ने टॉपिक मुझे 2 मिनट पहले अभी दिया है,
तो मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट कर रहा अरे हूँ। भाई सुबह से लॉन्च किया हुआ है, आप देख पढ़ ही नहीं रहे, क्या करूं मैं? सो मैं फोन कर चुका ओके, हूँ। तो इन्होंने प्रदूषण की कुछ बात कही, तो प्रदूषण पे मुझे यही कहना है कि आप लोग सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुन रहे होंगे आजकल। चैट जीपीटी बहुत मजा आ रहा होगा यूज करने में, लाइक। लेकिन प्रेक्सटल करके एक इंडियन लड़के का बनाया हुआ जो चैट जीपीटी का बाप है, उसको आप लोग यूज नहीं करते हैं। और आप बात करेंगे कि भारत कैसे आगे बढ़े। तो नाउ कमिंग बैक टू पोल्यूशन, देखिए ये जो जितने भी डेटा फार्मिंग हो रही है वर्ल्ड में, जितना भी सर्वर्स लग रहे हैं, डू यू नो हाउ मच एनर्जी दैट इज गोइंग टू कंज्यूम, एंड एनवायरनमेंट को कैसे ये स्क्रू अप करेंगे, कैसे आपके पीने की पानी को कैसे ये सोखेंगे। आप उसका डेटा एक एक जाके गूगल पे सर्च कीजिए या उसी चैट जीपीटी से बोलिए कि एक सिंपल क्वेरी, ये प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं, जिससे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, उसको रन करने के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। वो देश जो कभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि एयर कंडीशन की मशीन को लगाने के लिए दुनिया के में एक होल कर दिया अपने ओजोन लेयर पे, आज वो पोल्यूशन नंबर 2, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी डेटा फार्म बन रहा है हर जगह, वो कितना एनर्जी आपका कंज्यूम करेगा। उसका आज का डेटा है कि कितने साल तक वो पूरे यूरोप का या पूरे अमेरिका की एनर्जी को सपोर्ट कर सकता है। इस कुछ ऐसा ऐसा वेरी चौंकाने वाला डेटा है। तो पोल्यूशन में एक मेरा पहला वो हो गया कि जो रोते हैं सबसे ज्यादा, वही सबसे ज्यादा इसको क्रिएट कर रहे हैं। बाकी और क्या विषय है? अर्चना जी, आपने क्या टच किया? बिकॉज आई जस्ट जॉइन। चलिए मैं टॉपिक दूसरा, मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूँ। अभी एक एक जैसे अभी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है एएनआई के वीडियो का, where they have mocked Indian Air Force and other officials for having a Uber tie-up। उस पे भी हम लोग अपने व्यूज, मुझे तो लगता है वो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, क्योंकि मेरे सब मित्र हैं, वो सभी लोग मित्र हैं कुछ को छोड़ के उसमें से। और उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट बी। अभी आनंद आनंद जी तो बड़ा क्लियरली बोल दिया है, सो आई ही सेड दैट ही डिड नॉट मी, ही जस्ट सेड बिजार। और डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट पे बोला है कि बट सो आनंद जी हैज ऑलरेडी सेड रिलीज अ वीडियो, सो आनंद रंगनाथन जी थैंक यू। बट बाकी लोगों ने नहीं किया है क्लैरिफिकेशन। दे हैव कॉल्ड नेम्स टू आईएएफ फॉर एंटरिंग टू टाई अप विद उबर। और मुझे लगता है कि वो जो पूरा इंसिडेंट है हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आल्सो, बट द वर्ड्स यूज्ड वर वेरी पैथेटिक। क्योंकि लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आईएएफ के पास इतना दिमाग नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए, एंड दे आर द मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो वो शायद आपने देखा नहीं होगा कमेंट, बट विभूति जी ने देखा है शायद उसको, तो उस पर कुछ कमेंट करेंगे तो बताइए। नहीं, इंडियन आर्मी के प्रोफेशनलिज्म पे अगर कोई भी कमेंट कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पर ही कमेंट होना चाहिए कि वो कितना प्रोफेशनल है और कितना वो डोमेन एक्सपर्ट है। क्योंकि इंडियन आर्मी का जो डोमेन एक्सपर्टाइज है वो वर्ल्ड लेवल का है। उबर से टाई अप किया वो मैंने नहीं पढ़ा है, क्या टाई अप किया, क्यों किया। देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर अगर आजकल आजकल की लड़ाई में ड्रोन का यूज हो रहा है, ड्रोन कुड बी डिलीवर्ड थ्रू दी बॉर्डर पे बैठे हुए एसेट्स, तो उबर्स भी यूज होगा डिफरेंट कारण से। तो शतरंज के बहुत से चाल होते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिकॉज वो आपकी माइंड की कमजोरी है। लेकिन चूंकि मैंने इस पे नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट ऑल आई कैन से इन अ रैपिंग स्टेटमेंट इज प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन आर्मी कैन नॉट बी क्वेश्चन। 4 वॉर जीतने वाली आर्मी है, No, no, 4 no, Saraji, वॉर। I'll just interrupt you here. Not for any other reason, for the reason this particular topic was discussed in Jaipur, also in Jaipur Dialogue. ये बात आई थी, and General सॉरी Narayan and others had opined कि जो उबर का डेटा बाहर है ना, जी। and डेटा बाहर होने से you have the full access to the defense personnel movement. करेक्ट। You can track the movement of the defense forces, whether they are doing secret work or otherwise, vacation or otherwise. So you have a scenario कि किसी को breach हो सकता है. So हाँ। supposing somebody is targeting Sharad Mohan, who is a lieutenant colonel or brigadier or air marshal or whatever, हम्म। वो पता चल गया कि वो वहां है, लड़ाई शुरू हुई है, तो somebody can attack you directly where you are. Okay. Breach of data. That's the breach of data is the part. And was it necessary to use Uber? Why not use Ola? Ola is an Indian one.
So they said, why don't you ओला use ओला Ola को instead? भी क्वेश्चनेबल है, ओला को ओनरशिप भी क्वेश्चनेबल है। हाँ, वो ओनरशिप है तो देसी ना भैया। हमारे हम्म, देश में भी मिर्ची दगाबाजी तो कोई भी कर सकता है, राइट? आपको वो भी पता होगा कि जैसे 26/11 और कारगिल वाली जो लड़ाई हुई थी, एक पत्रकारिता थी जो वहां पे ऑन द लोकेशन वीडियो दिखा रही थी, सारे दुश्मन को फायदा हो रहा था। तो इस बात की चर्चा हो रही है कि एनिमी कैन बी एनीवेयर, बट व्हाई डू आई हैव टू डिस्क्लोज वेयर आई एम? व्हाई एक्सपोज द डेटा अनलेस पॉसिबिलिटी? हाँ, अनलेस और अनटिल वो सिविलियन रूप में अगर वो जा रहे हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और राइट, राइट, बहुत तरीका है उसको जानने का। ऊपर से करेक्ट। नहीं जाएंगे तो रिक्शा से भी जाएंगे तो वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो कवर्टेड ऑपरेशन में है उस समय तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी हिडन। सो अगर मैं उस लेवल पे नहीं जान रहा हूँ क्या प्लानिंग है, सोच है, सो कांट राइट। कमेंट। बट So first of all, we have a very prominent guest from Native American community, Andrew Aranda, who has joined us. So welcome, Andrew Aranda, and also happy Native American Heritage Month this month. So all of us are very proud of our Native, and we feel that we are Indians, very closely aligned with the Native American communities in the U.S. So thank you very much for joining today. And Vibhuti and Sharaji, you met them at the International Right. But I'm not seeing the video. Is he not on? He's not on the screen. No, he has joined as a comment. He's listening to our. Ah, okay, okay. It's Andrew Aranda is there. So now coming to the next topic, which is there, which about the election update. And Acha, I want to comment one thing a little bit on the data security, Vibhuti ji. So even if the servers of AWS or Microsoft or Google or IBM Cloud, they may be located in India, but there is a pipe connection to the country where they originate from. Hmm. So therefore, the data breach from any of these cloud-hosted platforms who are not owned by the Indian companies Right, is real, right. and it is real, and I totally agree with that. There is but I also know for a fact that there are ways in which through agreements you can control the data access, but it's just agreement. What happens behind the scene? Oh, koi bhi, anybody can move with their sleight of hand. So people are knowing. So anyway, that's a valid concern everyone has, especially the data security for them. Uh, Sharad ji and me both are very well versed in cyber security, very well versed. Okay, so now next is the point about the elections update. And before that, I'll slightly touch with the sanctions against India by American state and American treasury against individuals. I think that is a hypocrisy by the American government that they are putting sanctions while they're supplying weapons to Pakistan. So why should India will not be prompted to put sanctions on American companies? And I see the American decisions will make the defense cooperation much weaker in the future between India and USA. What do you say? शरद जी से पूछ रहा ना, शरद जी को बोलने दीजिए. आप बोलिए फिर शरद जी बोलेंगे. या Okay, no problem. बोलिए. I have said this several seasons ago हाँ. that US is probably hurting itself more by imposing sanctions on other countries. For any dissatisfaction or any policy differences you have, you impose a sanction. You use the threat of sanction and you use sanction as a tool of international relations, which is not okay. It makes an uneven playing ground. Because what happens if I impose sanction on you? That okay, American exports no longer welcome in India. What will America do? Think about it. There is always a retaliation for any policy thing you do. And I have said that this kind of a thing will lead to an international boycott of America, of which you and I are part of this country. So, as a citizen of America, I'm saying don't use a tool that you alone have the right to use, because if others begin to use, then you will not like it. Then you will say democratic violation. So, it's something like so I am totally against it. India has endured many more sanctions, and then what happens is you by imposing a sanction like this, because you have difference of opinion with Russia, you make local people unhappy. Remember that it is people begin to think that you are a big bully, you are what you are. You lose respect in fairness and trial. That's the way I look at it. Many people told me, oh, Trump has said that he will impose 10% tariff on India.
I said tariff is different than sanction. Tariff is a trade protection, trade and a business settlement negotiation tool. So if supposing Indians are willing to pay for the goods that is coming from America, or Americans are willing to pay whatever goods are coming from India 10% extra, they will pay regardless of that. It is not that the demand supply gets immediately affected, but what happens is that you are protecting your domestic industry. That's why people use tariff as a negotiation tool. But sanction is a one-sided action. And Agree. that cannot be a sign of good friendship, particularly when you call that other country a strategic ally and a natural partner. You have common agenda. So for one agenda, you begin to treat, there you create a problem. And I think that will not be well received by India. And I know it looks bad on Biden administration too, that just before election you do that. So you are trying to make your opponent look bad, that he will have to deal with it now. So these kind of machinations are not desired. I do not know. I believe there is enough knowledge, enough intelligence to weigh in factors. But if what America did in Bangladesh, which Trump condemned openly just 2 days ago, uh, you know, it reflects poorly on American foreign policy. That you are doing these things as an act of desperation. You are not trying to stop the war. You are telling Ukraine, go and fight till you win, and you are telling Israel, don't fight because you are winning. So people begin to see this as a farcical approach, and at least I am seeing it that way. So, Meghna Agarwalji, I'll tell you one thing. All American State Department and all the Anglo-Saxon policymakers of USA should know that India will always be a close friend of Russia more than Americans, because Americans play double game of selling weapons to India and also to their enemies, and regularly put sanctions against Indian individuals. Right. Therefore, they will always be, Russia and India will be always closer, come what may, whatever may happen. So Russia-India relationship on the military side is just like Russian-American-Israeli relationship on the military side, almost like that. So it's America is always a secondary military partner to India, secondary, not primary. So that is a fact written on the wall. So if you don't like it, then ignore it. And if I have seen many posts, very aggressive posts, that we can teach India a lesson. Not a single American victory has happened in any war since 1945. Right. American soldiers have not fought any professional army. So, they can try their luck if they want this time. Sharadji, what is your view? Uh, so I will not say that this is American stand. I would still tie it to a government. So Democrat government has actually goofed up their foreign policy with India, especially after Canadians started playing games. Now America has to protect Canada in all respect. So that is why they are making all these type of allegation. Regarding the sanction, I think Indian government spokesman already said, MEA spokesman, that the five individuals, not a government company, but a five individual businessmen, they have not broken the Indian laws. So we do not. So in other way, it's like showing middle finger to the American so-called sanctions. And again, it is not India specific. They have put 100 plus names in that. So that is number one point. The other point is, I would say, Sharadji, as but एक थोड़ा सा ऐड करूंगा आपके इधर, and you please answer that question also. That there is not a single most American sanctions are only for American public and American media. America is still the largest buyer of uranium and rare earth from Russia. Even today, yeah. uranium, all the American nuclear plants are working on Russian uranium. I mean, see, how we see, do we see these type of things only black and white, or there is always a gray? Because strategy means you have to
You have to protect your nation and maybe the policymakers for the larger interest of America uranium kharid rahe hai. But again, coming back to the point which I was saying, uh, there are a lot of good people in America, very sensitive people in America across the party line who are very concerned about the human rights across the world. And I would request them, all of them, that they should definitely see a human right issue of the sanction which they have put on a very neighboring region called Cuba, where people are dying because of the American enforced sanction and the poverty level and the disease and all those kind of things, just because the then government of America had a very bitter fallout with Fidel Castro. You have punished the entire country. And this is not an American founding father way I of saying America. I think Anybody wants to add? I'm not I, done yet. yeah, Huh. please. Okay, so that is one area which I think we should be very much concerned. Regarding the sanction, yeah, as you mentioned about the Russia, uh, well, the sanction has not worked in favor of America, and there was a voting in for the Cuba sanction, and 187 countries voted in favor of Cuba, saying that American sanctions should be lifted. This has actually affected the human rights situation, and America takes pride in human rights. So American politicians should definitely look into that, and we should be educating our congressman that you guys have fallen into a trap wherein there's no turning back. Regarding the sanction, देखिए, I have written in my book, India-America war, and everything is going as per the template. The American territorial activism or extra जो American interference है, it has. I was not thinking it will start 5 6 years so early. I was thinking it will start, but it has started that quickly. There is going to be a rebuttal. Even a victim, if America thinks that it's a what is that called? What's that syndrome where victims start loving the oppressor? Um, Stockholm syndrome. Stockholm syndrome. America is thinking that every time it will be Stockholm syndrome. It won't be. Victims को इतना मार दोगे कि victims जो all the countries of South is basically the war between the countries of South versus North, right? तो country of South को इतना मत दबाओ कि your any further pain in the form of sanction or bombarding will not be even a cause of concern for them, and this will be a very very dangerous situation for every American life, whether you are in America or whether you are in anywhere doing business across the world. Soon American businessmen may be targeted because of this one-sided sanction, and if American businessmen don't travel across the world, our business will be impacted. So policymakers have to think on the larger interest. World is no more single power, because other power centers have also come up to the speed, both from capacity perspective. So let's see, it's a bad time actually right now.